of Himachal Pradesh also. And I got this opportunity to deliberate particularly on the new education policy since 2020. Rather, prior to that also, whenever I got an opportunity. But one thing which I observed that what happened when this new education policy was introduced, particularly in our country, no doubt it was a need of an hour. But we cannot say that when policy 2020 came in the picture, the policies which were made long back in the 86 or prior to that were not useful, not at all. It was not like that. Because every policy is framed, is amended, is changed, is introduced, keeping in view the requirement, changing requirement of the stakeholders. Basically, who are the stakeholders? Our lovely students, our faculty, our teachers, academicians, and the entire academic world. Entire academic world, I am saying, not a country. So, whenever the changing requirement is demanded by the stakeholders, there is one way only to ensure that this changing demand can be satisfied effectively, constructively, purposefully. Then only we need to introduce and we need to change the existing policies by incorporating the requirement of that particular field. The reason being, this new education policy of 2020 came into picture. Now, second question comes up. Now we are not at a formulation stage. Now we are at the implementation stage. And sometimes when I went through each and every aspect and the concept as well as the thought as well as the spirit behind this policy, I was very much contented and happy that major part of this policy we have implemented in Himachal Pradesh Technical University in the year 2014. Yes. Because when I narrated that it is just like a beautiful old wine in a beautiful new bottle, then the question was raised to me, why are you saying this thing? I said that I am saying from one point only, that is my lovely state of Himachal Pradesh and my Himachal Pradesh Technical University, we launched this choice-based credit system with multiple entry and multiple exit system with the credit transfer. I am from the Sai University nowadays. I am also running pharmacy here. We are also having D pharmacy. We are having D pharmacy. Shortly we are going to start this farming, pharmaceutics and pharmaceuticals. But again I tell my people, I am faculty, if you want to see something different in the pharmaceutical institutions, please visit Laura. Their work speaks. So what I feel, the students who are here, they are lucky, and other way, this is your responsibility that you have to maintain the academic standard of these institutions by producing good and different results than the other pharmaceutical institutions of the state. They are very lucky that you are here. They are having a wonderful research experience. Next. And changing and challenging role of a teacher. And when I am talking about the changing and challenging role of the teacher, you students are also required to ensure your changing and challenging role at par with your teachers who are going to teach you this. तो सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा कि आप ये ना सोचें आप कहां से आए हैं. आप कोई आया है किसी गांव के +2 करके किसी शहर से आया है, कोई CBSE से आया है, कोई HP बोर्ड से आया है, कोई पब्लिक स्कूल से आया है, कोई कॉन्वेंट स्कूल से आया है, कोई सेकंड हाफ से, कहीं से भी आए हैं आप. Forget about it. Now question is very simple that when this new education policy was launched, there was a different opinions given by the different people, particularly by the teachers, we academicians. और ये बड़ी विडंबना की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे जो मेन स्टेक होल्डर हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो उन्होंने बिना पढ़े ही इसके ऊपर कमेंट देना शुरू कर दिया. आज भी टुडे इवन I can say that 40 to 50% of the teachers are there who have not gone through
each and every component and the vision and mission of this policy, why this policy has been prepared. But we keep on saying, हमारे बड़ा हुआ है, हमारे डिग्री कॉलेज में बहुत क्या रे भाई ये पॉलिसी, सर यहाँ तो टीचर नहीं, सर यहाँ तो कमरा नहीं, कहाँ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी? मैंने बोला भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, पढ़ी आपने? हमने जहमत नहीं उठाई कि हम उस पॉलिसी को प्रॉपरली पढ़ें, और हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड academicians are the different investors who have invested crores of rupees in this education world. So whenever some policy comes, please go through it properly and start commenting on it. India is such a place where we rush with our ideas, with the presumptions in our mind, and we conclude n number of results in advance. The education policy is the best, new education policy 2020 is the best policy, but we have to understand the spirit of this. So, देखिए जब भी हम कोई काम नया शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं. जब हमने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम शुरू किया, प्रोफेसर साहब जानते हैं, स्ट्राइक हो गई सारे कॉलेजेस की. CGPA से हमने थर्ड सेमेस्टर में प्रमोशन को रोक दिया, गाड़ियां टूट गई हमारे पुतले भी जले, हमारे वहाँ सब कुछ हुआ. लेकिन आज वो पॉलिसी, हम टस से मस नहीं हुए, और आज वो पॉलिसी देखिए जो 2014 में शुरू की, उसको नेशनल लेवल पे आने के लिए 6 साल और लगे, और 2020 में आए. ये विजन था हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का आज से 8 साल पहले. आई सल्यूट माय वाइस चांसलर प्रोफेसर आर शर्मा. 6 घंटे तक डीन अकेडमी को और वाइस चांसलर एक कमरे में बंद होकर बैठे रहते थे, और सबसे मुश्किल होता था सर को कन्विंस करना अगर कोई भी काम इंट्रोड्यूस करना है. और फार्मेसी में तो सबसे मुश्किल होता था, तो मुझे की रोल प्ले करना पड़ता था, और हेल्प किसकी लेता था, मैं आशा बच्ची. दिस वे, बिकॉज सिंपल सी बात है, झरनों का संगीत इतना मधुर ना होता अगर उनकी राहों में पत्थर ना होते. झरनों का संगीत इतना मधुर ना होता अगर उनकी राहों में पत्थर ना होते. अगर किसी तरह हमें उस वक्त बार हमारे लिए ऑब्स्टैकल्स डेटा करते तो हम सीखते नहीं, और सीखते नहीं, सीख के काम किया. तो देखो आज 6 साल बाद वो पॉलिसी मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की, चॉइस बेस्ड कैरियर सिस्टम की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑल इंडिया लेवल पे इंप्लीमेंट की. So again, even I say from every platform that HPTU introduced this system about 8 years back. हमने उस वक्त मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम को MBA में एक्सपेरिमेंटल किया, वो मेरी फील्ड थी. सबसे पहले मैंने वहां एक्सपेरिमेंट किया. हुआ क्या कि जो बच्चे हमारे MBA फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचते थे तो उनकी जॉब लग जाती थी, प्लेसमेंट हो जाती थी, और वो बच्चे छोड़ के जॉब ज्वाइन नहीं कर पाते थे, और एम्प्लॉयर जो कंपनी बोलती थी कि आप इमीडिएटली ज्वाइन करिए. हमने बोला नो इशू, आप 1 साल के बाद छोड़ना चाहते हैं चले जाइए, हम आपको PG डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट दे देंगे, आपके क्रेडिट हमारे पास हैं, आप 5 साल के अंदर जब भी आपको जॉब से फुर्सत मिलती है आप आइए, आप अगले 2 सेमेस्टर और कंप्लीट करिए और हमसे MBA की डिग्री लेके चलिए. अगर 3 to 4 स्टूडेंट्स टू बेनिफिट ऑफ दिस इन गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला, क्योंकि हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट जो थी MBA की वो धर्मशाला. हुआ क्या था, बच्चे जॉब ले लेते थे, बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते थे, क्योंकि इसमें दुविधा में है कि अगर कोर्स छोड़ूं तो ये नुकसान हो जाएगा, अगर ज्वाइन ना करूं तो जॉब का नुकसान हो जाएगा. और वो बच्चा होता क्या था, जब उसकी जॉब वो कंप्लीट होती थी तो केवल उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी प्लेसमेंट की, और वो बच्चा दोनों चीजें, फिर वो डिग्री उसकी जो है उसकी नहीं है. स्टार्टेड दिस. So that multiple entry, multiple exit system now launched in 3 phases. One is if you leave the course after first year, it will be a certificate. You'll get a certificate. If you second year, you'll get a diploma. If you get third year, then it is a degree. और आपकी जो 4th year में अब है, हम उसको रिसर्च डिग्री में न्यू एजुकेशन पॉलिसी कन्वर्ट करने जा रहे हैं. आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि फार्मेसी में होगा, थोड़ी देर में उसकी बात मैं आपसे करूंगा. राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑब्स्टैकल्स आर द गेटवे टू सक्सेस. अगर आपके जीवन में कोई भी मुश्किलात आती हैं, कोई भी डिफिकल्टीज आती हैं, तो आप उनको फेस करिए, इफेक्टिवली फेस करिए, क्योंकि जो ऑब्स्टैकल्स को फेस कर लेता है उसका रिजल्ट एक ही होता है, दैट ही और शी विल गेट only one thing, that is success. Right, so this is the most important thing which we can now. Basically, question is why those type of activities, because today is a education day and
this particular topic has been taken up by the MHRD. So basically, why those programs are necessary? Because whenever certain policies or certain norms which are being introduced, those are to be in the hands or in the brains of the ultimate stakeholders, we need such sessions. And very important thing which is desired, which is expected from the young generation, because young generation में anxiety level ज़्यादा होता है. मेरे में तो अभी इस उम्र में मैं young नहीं हूँ, I'm a retired professor. Right? कोई anxiety level ज़्यादा होता है किसी न किसी चीज को सीखने के लिए. लेकिन simultaneously one more thing is there. We are having one weakness in our mind that about the generation gap, as Professor Sahab was saying. जनरेशन गैप, वी नो, वी कीप इन माइंड, नहीं हमें सब पता है. बच्चा फादर बोलते हैं बेटा मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, इसको जरा चला दे. वो चला लेता है, पापा पूछते हैं बेटा जरा बताना कैसे चलेगा. वो कहता पापा छोड़ो आपको समझ नहीं आएगा, मैं चला दिया ना, अगली बार ऑनलाइन भी चला दूंगा. बट वो सिखाएगा नहीं. इट्स अ रियलिटी आई एम शेयरिंग विद यू. यू डू इट, माय सन आल्सो डज लाइक दिस. आप भी ऐसा करते होंगे. एंजाइटी लेवल ज्यादा है. और एक चीज और है कि हम अपने नॉलेज को शेयर नहीं करना चाहते हैं. We want to learn lot of things, but without sharing. But effective learning can take place only when we are having habit of this sharing our knowledge. Sharing is the best way to make your knowledge perfect. So keep on sharing. This is so whenever you join such sessions, first make a mindset that I need to learn something. आपको जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी नीड्स a regular learning. You know why? Because the life of particular technology is shortest in this universe. Today, if any computer is launched with any, whether it is a क्या बोलते हैं आप, जो भी कंप्यूटर्स की हैं, Core i3 है या कोई भी है, those keep on changing even after a period of 6 months and 1 year. Yes. So the equipment what we are getting today will become obsolete tomorrow. So what I mean that if I have learned one language, for example Python I have learned, tomorrow may possible that C++ is of my use. Day after tomorrow may possible that Java is of my use. So what I mean to say that whenever you join such sessions, join it with some paper in your hand. Keep on noting down the good things which you like. If you don't want to learn something out of that, keep that here. Don't waste your energy and time on that. Don't sit empty-handed whenever such type of programs are going on. The effectiveness will comparatively be lesser. I don't know what program, how the process is going on, but whenever I was conducting these type of activities in my institution, I had presently elected one person or two persons will be made the chairman who will record the entire proceedings and read out the report just after the completion of the talk. This way, we will keep on learning. So this is the process that why those programs are required. Immediately go from your mind that I know everything. Just after 35 years of my teaching experience, I am still a learner. Because whenever I face some problem in my mobile, and I am not able to solve it, a young boy of 15 years or 17 years or 20 years is solving my problem. It means I am still learning. Yes. Friends, I have told you that pharmacy education is on growth stage. मैं maturity तो नहीं बोलूँगा इसको. It is on growth stage. But if you want to compete in this growth stage of pharmacy education in the pharmacy world, you have to do something different. Dear friends, look around, things are different now. We must adopt the change. We must be ready for the new challenge. Please do different to create difference. Only then you are visible, real and effective teacher and effective student. आपको डिफरेंट करना पड़ेगा. मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, वेरी सिंपल एग्जांपल. मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, शायद इसके जो मैंने बड़ी बात दिया है एग्जांपल, क्योंकि ऑडियंस डिफरेंट है तो मैं रिपीट कर. इसमें एडमिशन ना ले पाए और फार्मेसी में आ गए तो अपने मन में मलाल ना रखें. आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल गई डॉक्टर से ज्यादा कि आप एक ऐसी मेडिसिन देखिए.
You have seen those miracles in COVID-19. You have seen the miracles of pharmacy people in COVID. Only one industry was there which could gain the exports, which could control the economy in that miserable time. That was only pharmaceutical sciences, health sector. Have you observed this thing? See yes, how much important the people are. So that's why I am saying that real and rare role is to be continued. That is the ultimate objective of the new educational policy. That's our vision and mission. Next slide. Yes. Friends, we have to work on 3 B's missions. ये मैंने अपने सिरे साई यूनिवर्सिटी में भी दिया है. तो मुझे आप मिशन बताइए सर, आप किस मिशन से टीम क्या चीज बनेगी? मैंने 3 महीने स्टडी किया. आशा बच्ची मुझे पहुंचाने वाले भी आशा बच्ची हैं वहां. और जब हमने वहां उसको स्टडी किया तो हमने बोला इसमें सब कुछ है, इसमें क्या चाहिए? We have to make it vibrant, we have to make it viable, and we have to make it visible. This 3B approach is the ultimate objective of the new education. मैंने कहाँ से निकाले 3B? ये मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पोस्टमार्टम किया है. 20-22 लेक्चर देके वहां से निकला है. अल्टीमेट थीम किया था. पढ़ाने नहीं आए हम आपको कि मल्टीपल एंड वो समझ आओगे आप सिलेबस. मैं सर ये बता रहा हूँ कि इसका मिशन क्या है. लेट अस कंट्रीब्यूट टू 3 विजन मिशन ऑफ एनईपी एट इंस्टीट्यूशन लेवल एंड मेक इट vibrant, viable, and visible. Laureate Institute is known in the pharmaceutical education world because of it is vibrant, it is viable, and it is visible. Now, it is vibrant, it is viable, and it is visible. But it is not a show of 1 day or 2 days. You have to maintain it. You people have to maintain it. The historic achievement which have been achieved by these institutions are to be maintained by the students who are joining these institutions today or who will join tomorrow. This is a liability. Whenever you are joining some good institution, it is not only your asset only, it is a liability also to maintain the academic heritage achievements of that institution. That's why you have to work on 3 B's mission. यही कहती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी. इंस्टीट्यूशन बहुत खुल गए. इतनी मशरूमी हुई इंस्टीट्यूशंस की पिछले कुछ सालों में कि ऐसी सिचुएशन आ गई वेयर देयर वर स्टूडेंट्स, देयर वर नो इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर देयर वाज इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर वर नो स्टूडेंट्स. कितना बड़ा गैप हो गया. और मैंने इन इंस्टीट्यूशंस को पीक पे जाते भी देखा, सैचुरेशन को भी देखा, और जब सैचुरेशन पे इन्होंने अपने आप को नहीं संभाला तो ये डाउनफॉल में आना शुरू हो. उन लोगों ने, वो लोग डाउनफॉल में नहीं आए जिन्होंने सैचुरेशन स्टेज पे जब पहुंचा. जो यहाँ कुछ मैनेजमेंट के लोग बैठे तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को जानते होंगे. जब हम सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो हमारे पास 2 तरीके रहते हैं अपने आप को बचाने के डिक्लाइनिंग स्टेज से. 1, वी शुड गो फॉर द एक्सपेंशन. 2nd, वी शुड गो फॉर द डाइवर्सिफिकेशन एट सैचुरेशन स्टेज. We will ensure that we will go for the declining, the movement will go to the decline.